Good morning, grade 4 students. So, yesterday we learned some new terminologies from the chapter Environment, and today is our story day. So, are you ready to listen the story? Great. So, first of all, tell me, have you ever visited any safari park? क्या आपने कभी कोई सफारी पार्क जो है वो विज़िट किया है? वहाँ का आपने एनवायरनमेंट देखा है? वहाँ पे बहुत से एनिमल्स होते हैं, वहाँ पर वो एनिमल्स जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं घूमने फिरने में, लेकिन बहरहाल एक बाउंड्री होती है क्योंकि वो एक नेचुरल फॉरेस्ट या जंगल नहीं होता. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर स्टोरी एंड द स्टोरी नेम इज environment. So do you want to listen this story? Great. So be ready. Environment. Habitat. It means that the area is suitable for the living thing you have observed. An area that is suitable for a living thing to live and breed is called habitat. एक ऐसा सूटेबल एरिया जो किसी भी एनिमल के लिए रहने की जगह हो, सूटेबल जगह हो और जहाँ पर वो ब्रीड कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट. एन एरिया दैट इज सूटेबल फॉर अ लिविंग थिंग टू लिव एंड ब्रीड इज कॉल्ड एज हैबिटेट. इकोसिस्टम. Habitat is a part of an ecosystem. An ecosystem can have many habitats. An ecosystem has producers, primary consumers, secondary consumers, and decomposers. Producers. Plants are called the producers because they make their own food with the help of sunlight. पौधे जो हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद से बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से. Plants are called the producers because they make their own food with the help of sunlight. Plants are the producers. There are millions of different species of plants in the world. दुनिया में लाखों किस्म के डिफरेंट स्पीशीज हैं पौधों की इस दुनिया में. There are millions of different species of plants in the world. Primary consumers. The producers are eaten by primary consumers. The primary consumers can be the caterpillars that munch on plant leaves. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो कैटरपिलर होते हैं जो पत्तों को क्या करते हैं? चबाते हैं. द प्राइमरी कंज्यूमर्स कैन बी द कैटरपिलर्स दैट मंच ऑन प्लांट लीव्स. द नेक्टर फाउंड इन द फ्लावर्स इज द फूड सोर्स ऑफ हनी बीज. So the honey bee is a primary consumer as well. A parrot eats fruits and grains and that makes it a primary consumer also. Goats, cows, horses are some of the animals that eat plants to survive. So they belong to the group of primary consumers. Secondary consumers. Then there are the secondary consumers. They eat other animals to survive. A frog extends its tongue and swallows a honeybee on its way to collect nectar from flowers. That makes frog a secondary consumer. A snake grabs a sparrow eating some grains. That makes a snake a secondary consumer as well. Decomposers. Finally, there are the decomposers. These are the tiny bacteria and viruses that eat up every bit of the dead animal, insect or bird. सबसे आखिर में डिकम्पोजर्स आते हैं. ये वो टाइनी छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो एक छोटा छोटा सा पार्ट भी किसी डेड एनिमल या प्लांट या बर्ड का बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, खा लेते हैं. Finally, there are the decomposers. These are the tiny bacteria and viruses that eat up every bit of the dead animal, insect or bird. They cannot be seen with the naked eye, but they are all around us. They attack the dead bodies of all the living things and eat everything of the dead bodies except for the bones.
In a healthy ecosystem, the producers are in the largest quantity. The primary consumers are less than the producers, and secondary consumers are the least in the quantity. The ecosystem of a pond. This is the ecosystem of a pond. Algae, bushes, and the trees are the producers. Fish and snails are the primary consumers, and the frog is the secondary consumer. The ecosystem of a forest. अब हम डिस्कस कर रहे हैं इकोसिस्टम फॉरेस्ट का. This is the ecosystem of a forest. Trees, grass, and the shrubs are the producers, and the rabbit is a primary and fox is a secondary consumer. So here you can see the ecosystem of a forest. This is the ecosystem of a forest. इसमें trees, grass and shrubs are the producers, और rabbit जो है वो primary consumer है और fox जो है वो secondary consumer है. क्योंकि इस grass को, trees, shrubs को कौन खा रहा होता है? rabbit. और rabbit को कौन खा लेता है? fox. The ecosystem of a desert. This is the ecosystem of a desert. Cactus and small plants are the producers. Primary consumers are birds and mice. Snake and lizard are secondary consumers. All habitats are part of an ecosystem. All the living things that are part of an ecosystem have a habitat within that ecosystem. A cat that you see around your house has a habitat of its own in your area. एक बिल्ली जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं तो वो उसका हैबिटेट है, उस एरिया में वो उसका हैबिटेट है. A cat that you see around your house has a habitat of its own in your area. But it's also a part of large ecosystem where it lives with other living things. An ecosystem has many habitats belonging to producers, consumers, and decomposers. Even an ecosystem is part of a larger surrounding called the environment or biosphere. So biospheres. The biosphere is the environment all around us. It's our surrounding. It has everything we need to live and grow. ये हमारी सराउंडिंग है और इसमें वो सब कुछ है जो हमें जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए चाहिए. It's our surrounding. It has everything we need to live and grow. That's why it's called the biosphere, as bio means life and sphere means a very large area. There are 3 kinds of biospheres around us. Each biosphere then has many ecosystems, and each ecosystem has many habitats. Atmosphere. This sphere is all above us. It has the air we breathe. Think of it as an invisible ocean of gases, and we live at the bottom of the ocean. Water, vapor and dust are also part of Earth's atmosphere. The atmosphere has 5 layers. Clouds are found in the first layer of the atmosphere. It blocks some of the sun's dangerous rays from reaching Earth. तो ये क्या करते हैं ये क्लाउड? ये ब्लॉक करते हैं सूरज की जो खतरनाक शुआएं हैं उनको ज़मीन तक पहुंचने में. It blocks some of the sun's dangerous rays from reaching Earth. It traps heat, making Earth's temperature comfortable. Lithosphere. It's the solid earth that we live and walk on. It's the outer part of the earth. Lithosphere takes many shapes and colors. At some places you see mountains while some places are plain. तो आप कुछ जगह पर देखते हैं कि बहुत जो है हाई बड़े ह्यूज माउंटेन्स हैं और कुछ जगहें जो हैं वो बिल्कुल प्लेन हैं. At some places you see mountains while some places are totally plain.
Lithosphere can have different temperatures depending on the locations. It's hot in the desert of Africa and cools around the north and south poles. All kind of plants has its roots inside this sphere. There are two kinds of the lithosphere. The one that is outside the ocean and the one that's at the bottom of the ocean. Hydrosphere. Hydro means water, and you already know that sphere means area or surrounding. The hydrosphere is all the water found on planet Earth. This water is found in different forms and places. It can be in the form of vapors, in the clouds, or it can be in the shape of liquid in the rivers, lakes and streams. तो हाइड्रोस्फीयर को आप बादलों के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे वेपर्स होता है बादलों के अंदर होता है, और इसी तरह से आप इसको लिक्विड में भी देख सकते हैं, जैसे रिवर्स दरियाओं में और इसी तरह नदी नालों के अंदर. और इट मे बी स्टोर्ड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स और अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इन द फॉर्म ऑफ आइस, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं. वाटर मूव्स इन साइकिल्स. It rises from the ocean in the form of vapors, then it rains in the form of liquid, and some of it stored at some places in the form of ice. Abiotic and biotic factors. All spheres are divided into two factors, non-living and living. ये तमाम जो स्फीयर्स हैं इनको डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है दो फैक्टर्स में, एक नॉन लिविंग फैक्टर है और एक लिविंग है. ऑल स्फीयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग. द नॉन लिविंग फैक्टर्स इंक्लूड सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर एंड टेम्परेचर. द नॉन लिविंग फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड abiotic factors. The abiotic factors differ slightly in three different spheres. For example, the hydrosphere has more water and less air. The atmosphere has more air and less water. The lithosphere has more rocks and less sunlight. The atmosphere has no rocks but lots of sunlight. The living factor includes plants, animals, fungi and bacteria. They are also called biotic factors. जो लिविंग फैक्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें पौधे हैं, उसमें फंगी, बैक्टीरिया, और इनको हम बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं. The living factors include plants, animals, fungi and bacteria. They are also called biotic factors. In an environment, biotic and abiotic factors keep affecting each other. All the biotic factors need abiotic factors to survive. The right combination of biotic and abiotic factors creates an ecosystem. The ecosystem then has many habitats. Abiotic and biotic factors balance. The balance between abiotic and biotic factors must be maintained all the time. Life ends when the abiotic factors are damaged over a long period of time. ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है अगर abiotic factors जो हैं वो डैमेज हो जाएं एक लंबे अरसे के बाद. The damage done to the abiotic factor is called pollution. ये जो डैमेज होता है abiotic factor का, उसकी जो रीज़न है, जो फैक्टर है, उसको क्या कहते हैं? वो pollution है. Only humans can cause pollution to the environment. सिर्फ और सिर्फ इंसान जो हैं वो pollution, इस environment में pollution जो है आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं. Only humans can cause pollution to the environment. The pollution we produce is continuously destroying all the spheres, atmosphere, lithosphere and the hydrosphere. Now let's find out how humans are causing pollution to the environment and how the damage done to the abiotic factors is damaging the biotic factors. We know that abiotic factors include air, water, land and temperature. Unfortunately, humans are causing damage to all four of them. Humans are releasing harmful gases in the atmosphere. Vehicles and factories produce these gases. Pollution is created when gases are trapped in the atmosphere. This pollution affects us in two ways. It increases the temperature of our planet.
The gases enters our bodies when we inhale air. This polluted air damages our lungs, heart and brain. We throw garbage and chemicals on the ground. The garbage and chemicals we throw on the ground contain dangerous chemicals that pollute the land. ये जो हम गार्बेज, गंदगी, केमिकल्स ग्राउंड पर, ज़मीन पर फेंक देते हैं, ये गार्बेज और केमिकल जो हम फेंक रहे होते हैं इंतहाई ज़्यादा डेंजरस होता है हमारी ज़मीन के लिए. We throw garbage and chemicals on the ground. The garbage and chemicals we throw on the ground contain dangerous chemicals that pollute the land. This pollution kills plants, animals. Animals needs plants for food. Lack of plants mean death for animals. ये जो पोल्यूशन है ये पौधों को ख़त्म कर देती है. एनिमल्स को पौधे चाहिए खाने के लिए, खुराक के लिए, और जो लैक ऑफ प्लांट्स है यानी कि पौधों की जो कमी है उसका मतलब है कि जानवरों की मौत. दिस पोल्यूशन किल्स प्लांट्स. एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर गुड food. Lack of plants means death for animals. We also release chemicals and sewage into hydrosphere. These chemicals and are poisonous. Living things die when water mixed with these chemicals and enter their bodies. Even the fish that survive in these polluted waters contain dangerous chemicals. Humans then eat these fish and get sick. अब आप देखें कि ये जो सेवरेज और इससे जो पोल्यूशन होती है, वो जब पानी में रह रही है मछली तो उसके अंदर भी बहुत से केमिकल्स जाना शुरू हो जाते हैं, और जब इंसान वो मछली खाते हैं तो वो भी बीमार हो जाता है. Even the fish that survive in these polluted waters contain dangerous chemicals. Humans then eat these fish and get sick. Humans also get sick when they drink polluted waters. और इंसान तब भी बीमार हो जाते हैं जब वो आलूदा पानी पीते हैं. Humans also get sick when they drink polluted waters. So students, ये आज की हमारी स्टोरी थी इन्वायरमेंट को लेकर. और आपने देखा होगा कि इंसान किस तरह से, जैसे आपने स्टोरी में सुना कि इस एनवायरनमेंट को सिर्फ पोल्यूटेड करने में जो सबसे बड़ा है, बल्कि इंसान ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है. तो आज आपने क्या करना है, आपने उन तमाम फैक्टर्स को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करना है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो रहा है, वो पोल्यूटेड हो रहा है. देन आपने इस स्टोरी को ख़ुद से रीड करना है अच्छे तरीके से. आप भले इसकी कंप्लीट स्टोरी मत रीड कीजिएगा, आप इसका 2 या 3 पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करवा कर इसकी वीडियो को और आप अपने टीचर्स को सबमिट करेंगे. ठीक है जी, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.